हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मैं लेके आया हूँ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए इन्वायरमेंट एजुकेशन के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए टाइम बहुत ही कम रह गया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रृंखला आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मतलब कि बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये इन क्वेश्चन से आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और ग्रो अप होगा कि मतलब आप लोग एग्जाम में आप लोग को तैयारी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इसमें। सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। हम लोग आगे क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? A. Producer, decomposer, consumer. B. Decomposer, consumer, producer. Or C. Producer, consumer, decomposer. Or D. Consumer, producer, or decomposers. The correct answer is this: C. Producer, consumer, and the decomposers. The energy flow in ecosystem is represented by producer, then consumer, then decomposer. Okay, friends? This is the correct answer. Next question. Which of the following three R's are regarded as environment friendly? Reduce, reuse, recycle, read, register, recall, random reduce, recall, reduce, rebuild, restrict. The correct answer is it's reduce, reuse, and recycle. The correct option is option A. An organism which can monitor air pollution is A. Fungi, B. Algae, C. Bacteria, D. Lichen. The correct answer is option D. It's lichen. Next question. Translocation of water is A. Apoplastic, B. Symplastic, C. Both A and B, or D. None of the above. The correct answer is it's C. Both A and B. The apoplastic and the symplastic. These are the translocation of the water. Translocation of water is both apoplastic and the symplastic. Okay, friends. Next question. Green blocks are referred to A. Probiotic curd, B. Biobricks, C. Green cover, D. Green ministry. The correct answer is it's option B. Biobricks. Biobricks. Green blocks are referred to the biobricks. One of the best solutions to get rid of non-biodegradable waste is burning, dumping, recycling. The correct answer is it's option D. Recycling. Recycling is the best solution to get rid of non-biodegradable wastes. What is the biodiversity? Many types of flora and fauna in one forest. Many types of flora and fauna in many forests. Many many populations of one species in one forest. Or all of the above are true. The correct option is it's A. Many types of flora and fauna in one forest. Friends, if you know about the flora and fauna, please comment on the given comment section. दोस्तों, फ्लोरा एंड फोना के बारे में आप लोग छोटी छोटी डिटेल इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग पता है फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, उस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, टू कंजर्व कोरल रीफ्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एज मेरीन पार्क। A. Gulf of Mannar, B. Andaman Island, C. Gulf of Kutch, D. Lakshadweep Island. The correct option is option C. Gulf of Kutch. Okay, friends, this one. Next, the environment includes A. Biotic factor, B. Biotic factor, C. Oxygen and nitrogen, D. Abiotic and biotic factor. The correct answer is option D. It's the abiotic and the biotic factors. Okay, friends. Next question. Identify the correct statement with respect to biogas. Mixture of gases from volcanoes, gas produced by fermentation of biomass, C. Gas produced from certain crude oil wells, D. Gas produced by incomplete combustion of biomass. The correct answer is it's D. B. Gas produced by fermentation of biomass. Okay, friends, this is the correct answer. Next question.
The ambient air quality standard 24 hours average for lead in industrial area is, the options are given, which one of these is the correct answer? So friends, the correct answer is D, 1.5 microgram per meter cube. This is the correct answer for this question. फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस की, इस टाइप की यूनिट्स को आप लोग एक बार रट लीजिए, क्योंकि इस टाइप की है ना, एग्जाम के टाइम में आप लोग की माइंड स्किप कर जाता है कि इसकी यूनिट्स स्टैंडर्ड क्वालिटी या इसका एयर का क्या रहता है, तो उस समय ध्यान नहीं आता है। सो फ्रेंड, इसको एक दो बार आप लोग मतलब कहीं लिख लीजिए और इसको एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन यूनिट्स को। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 12वां। Thinner particles responsible for deteriorating the air quality resulting in the damage of vital body organs are referred as PM. 5.5, 15.5, 10.5, 2.5 or 20.5. The correct option is it's 2.5. Okay friends. Next question. The particulate matter PM10 exhaled from the populated atmosphere is often filtered out during the process of coughing, sneezing, both A and B, D, urination. The correct option is it's C, both A and B. Okay, it's coughing and sneezing both. Acceptable noise pollutions level in India range between 16 to 35 December, 40 to 45 December, 70 to 100 December, or sorry friends, this is not December, this is Tech. It's a huge mistake, sorry friends. It's 16 to 35 Tech, 40 to 45 Dec, 70 to 100 Dec, and 10 to 15 Dec. Okay friends, noise pollution level, it's the correct option is B, 40 to 45 Dec. Okay friends. Next, 15. Transboundary pollution or acid rain is caused by hydrocarbon, carbon dioxide, carbon monoxide, D, nitrogen oxide and sulfur dioxide. The correct answer is nitrogen oxide and the sulfur dioxide. Air quality depicting PM 2.5 is more hazardous to old men and women, national parks, botanical gardens, archaeological monuments. The correct answer is it's old men and the women. The air quality depicting PM 2.5 more hazardous to old men and women. Which of the following organism is most likely to produce greenhouse gases such as nitrous oxides and methane? Bacteria, fungi, green plants, earthworm. The correct answer is C. It's the green plant. Okay friends, let's move on to the next question. Question number 80. Human Environment Conferences in 1972 was held at A. Paris, B. Geneva, C. Stockholm, D. Australia. ह्यूमन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस इन 1972 कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका स्टॉकहोम. इन स्टॉकहोम द ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस 1972 was held. Next question. Of the following man-made disasters, which is socially induced? A. Arson, B. Ozone depletion, C. Debris avalanche, D. Saltwater intrusion. The correct option is option A. It's arson. In the following man-made disasters, the socially induced is arson. Okay, friends, the correct option is option A. Next question. The ambient air is stable when the ambient lapse rate is neutrally stable, sub-adiabatic, hyperadiabatic, or the D super adiabatic. Friends, डू यू नो अबाउट एडियाबेटिक? व्हाट इज एडियाबेटिक? फ्रेंड्स, एडियाबेटिक के बारे में आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में इसको भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि वो एडियाबेटिक क्या होता है. आपको मैंने दो क्वेश्चंस दिए हैं, एक ऊपर क्वेश्चंस था और एक ये वाला क्वेश्चन है. सो फ्रेंड्स, इन दोनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या होता है ये. सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सब एडियाबेटिक. Ambient air is stable when the ambient lapse rate is sub-adiabatic. So correct option is option B. Okay.
So friends, thank you friends for watching this video. Friends, I hope you like this video and please do like, share and subscribe this channel. And friends, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, बने रहिए अपने चैनल स्टडी एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।